हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो को समस्त प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स साइंस एवं कॉमर्स पिला को स्वागत। आज वीडियो आम प्लस टू सेकेंड ईयर इंग्लिश ग्रामर रो रिपोर्टेड स्पीच रु केते गुड़िए एमसीक्यू प्रश्न देखिबा। केउं सब प्रश्न एमसीक्यू आकार आसीपारे रिपोर्टेड स्पीच रु आज वीडियो रे ताको आम जानिबा एवं तार उत्तर करने चेष्टा करिबा। ओके, आउ समय नष्ट न करी आमे आजिर वीडियो को आरंभ करिबा। ओके, रिपोर्टेड स्पीच एमसीक्यू क्वेश्चंस। नंबर 1, he said that he dash passed the examination. He said that he dash passed the examination. ऑप्शन गुड़िक अच्छी हेड, आई रे हेड, डबल आई हेज, ट्रिपल आई हैव, आई भी नॉन। कोटी ठीक है। ही सेड दैट ही डैश पास्ड द एग्जामिनेशन। सिंपल पास्ट रे सेंटेंस टी थिला, डायरेक्ट सेंटेंस टी थिला, ताले डायरेक्ट स्पीच को एटी इनडायरेक्ट कराई थी, रिपोर्टेड स्पीच कराई थी। तेनो डायरेक्ट स्पीच टी सिंपल पास्ट रे थिबारु एटा कोन हबो, वाज कोन हां पास्ट पूर्वरु ए जो डैश अछि सेते कोन बसिबो, हेड बसिबो। कोन बसिबो, हेड। ऑक्सिलरी पास्ट हे जिवो। he said that he dash passed the examination। ऑप्शन थिला हेड, हैज, हैव, नॉन। ताले डायरेक्ट स्पीच टी पास्ट रे थिबारु हमरो रिपोर्टेड स्पीच टी से पास्ट रहइबो, किंतु तापर हेड लागिबो। ओके, तापर देखिबा नंबर 2, द फार्मर सेज दैट ही डैश बिजी। द फार्मर सेज दैट ही डैश बिजी। ऑप्शन लिखला डैश रे कोन लागिबो, आई रे वाज, डबल आई हैज, ट्रिपल आई इज, आई भी नॉन। आमे देखिबा द फार्मर सेज दैट ही डैश बिजी। एटा कोन अछि, सिंपल प्रेजेंट रे अछि, एटी सेज अछि, सेज एथि जने सिंपल प्रेजेंट रे अछि। तेनो हमरो इन्वर्टेड कॉमा भितरे जो वर्ब थाई, जदि ता पूर्व इन्वर्टेड कॉमा बाहर डायरेक्ट स्पीच रे इन्वर्टेड कॉमा बाहर जदि प्रेजेंट थिबो ताले इन्वर्टेड कॉमा भितरे मध्ये प्रेजेंट रहिबो। तेनो एटा ए जो रिपोर्टेड स्पीच हेछि एथि कोन होछि, द फार्मर सेज सिंपल प्रेजेंट अछि। तेनो दैट ही एथि मध्ये प्रेजेंट हेबो। प्रेजेंट कोटा अछि वाज, हैज, इज, नॉन। ऑक्सिलरी वर्ब लागिबो। तेनो कोन हो, इज हेबो। कोन हो, इज हेबो, इज लागिबो। The farmer says that he is busy हेबो। ओके, नंबर 3, I asked the boy if he had dashed to school। I asked the boy if he had dashed to school। ऑप्शन अछि I went, डबल आई gone, ट्रिपल आई go, आई भी none। एई चारिटिरु जे कोनसी गोटिए ए डैश रे लगे पड़िबो। I asked the boy if he had dashed to school। ताल कोन हबो, went, gone, go, none। एटा yes no क्वेश्चन रो गटे सेंटेंस। he asked the boy if एटा रिपोर्टेड स्पीच एटी। तन कोन हबो, एटी हेड अछि, तेनु ता पछरटे पास्ट पार्टिसिपल लागिबो। एटी पास्ट पार्टिसिपल के अछि, गॉन अछि एटा। तेनु ताले एटा उत्तर हबो, हेड परे गोटे पास्ट पार्टिसिपल लागिबो। I asked the boy if he had gone to school। ओके, नंबर 4, he asked her if she was dash। he asked her if she was dash, I weep, डबल आई wept, ट्रिपल आई weeping, आई भी नॉन। weep माने कांदिबा। he asked her if she was, से ताको पचारले से कोन कांदुथिला कि ए उत्तर आसीबो। तेनो एटा गोटे यस नो क्वेश्चन सेंटेंस।
ତେଣୁ he asked her if she was dash ହେବ କଣ ହେବ was ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଠି ହେବ ing ଲାଗିବ participle କଣ ing ଲାଗିବ ତେଣୁ ଏଇଠି ing verb ଲାଗିବ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେବ weeping he asked her if she was weeping ଏମିତି ହେବ number 5 Robbie said that he does not like milk in his tea. Robbie said that he does not like milk in his tea. Robbie କହିଲା ସେ କ୍ଷୀରରେ କଣ ଚାରେ କ୍ଷୀର ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ ଓକେ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସରେ ଅଛି ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସ ରବି said that he does not like milk in his tea. Robbie said that he does not like milk in his tea. Option la I do, double I does, triple I did, I be none. কোটা হবো Robbie said that he does not like এই যে said ଅଛି ওকে এটা past ରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସ ରେ ଅଛି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କୁ ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସ ରେ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ କଣ ହବ ଭାର୍ବ ମଧ୍ୟ ସିମ୍ପଲ ହେଇଯିବ ଏଠି ତେଣୁ କଣ ହବ এইটা হবো কোন does or does not Robbie said that he does not like milk in his tea Robbie said that he does not like milk in his tea তাহলে এই রিপোর্টেড স্পিচ গুড়িক କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ମାନେ ସୂତ୍ର ଗୁଡିକ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ବହିରେ ତାହେଲେ ଏଗୁଡି କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ଓକେ number 6 Ram told his friend that he does ill Ram told his friend that he does ill ରାମ ତା ସାଙ୍ଗ କହିଲା ଯେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା Ram told his friend that he does ill ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହବ told ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଅପସନ ଅଛି I is double I was triple I will I be none ତାହେଲେ କୋଉ ଠିକ ହେବ Ram told his friend that he does ill actually sentence ଟି direct sentence ଟି past ରେ ଥିଲେ ଏଇ ଟାଇପ ର ହୁଏ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଲାଗିଥିଲେ said ପରେ told ଲାଗେ ସେଥିରେ ତାହେଲେ Ram told his friend that he does ill past ରେ ଥିବାରୁ sentence ଟି କଣ ଲାଗିବ was ଲାଗିବ କଣ ଲାଗିବ was ଲାଗିବ double I ରେ was ଅଛି ତେଣୁ କଣ ଲାଗିବ was answer ଟି କଣ ହେବ Ram told his friend that he was ill okay number 7 Sita told me that I dared not play Sita told me that I dared not play option ଅଛି I will double I am triple I would I be none କୋଉଠି ଠିକ ହେବ Sita told me that I dared not play Sita told me that I dared not play will am would none କୋଉଟା ହେବ ଏଇଟା ବି number 6 ପରି ହେବ କଣ ହେବ number 6 ଯେମିତି କଣ told ଥିଲା ଏବଂ past ଥିଲା এটা ସେମିତି past ଗୋଟେ ଲାଗିବ past କଣ ଲାଗିବ ଏଠି କିଏ past ଅଛି will ଏଇଟା ନୁହେଁ am ନୁହେଁ would ଏଇଟା past ଅଛି ଏଇଟା ଲାଗିବ ଓକେ Sita told me that I would not play 8 number ପ୍ରଶ୍ନ The girl asked if she dares go out for shopping The girl asked if she dares go out for shopping option I will double I would triple I was I be none କୋଉଠି ଠିକ ହେବ The girl asked if she dares go out for shopping କଣ ହେବ କୋଉଟା ଉତ୍ତର ହେବ will would was none କୋଉଟା ହେବ এইটা asked ଅଛି ଏବଂ এইটা সেন্টেন্সটা কোন ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ଏଇ ଟାଇପର if ଲାଗେ କିମ୍ବା
whether লাগে এটি if লাগিছি the girl asked if she dash go out for shopping while old was none interrogative sentence এটা কেন এইଥିରେ কোন লাগিব ଏଥିରେ ବି would লাগিব কোন লাগিব if she would go out for shopping okay the girl asked if she would go out for shopping interrogative sentence ରେ କେମିତି passive ହୁଏ କଣ ସରି reported ହୁଏ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ କଲେ ମୁଁ କିଛି क्वेश्चन आर आंसर देखिए एग्जांपल देखिए बुझेइदिबी नंबर 9 he asked me what I doing he asked me what I doing optional I am double I was triple I is IV none he asked me what I dash doing कौन हो am है ना was है ना is ना none हो এইটা ডবল এইচ क्वेश्चन थिला डबल एच क्वेश्चन को रिपोर्टेड कराइछि लिखाइछि आस्क्ड मी मते पचरा गला व्हाट आई डूइंग मु कोन करूथिली ए उत्तर आसीबो तेनो आई पाखरे कोन लागिबो एम तो लागिबो नि पास्ट अछि एटा पास्ट अछि आस्क्ड पास्ट अछि तेनो वाज लागिबो कोन लागिबो वाज लागिबो पास्ट टेंस रे अछि तेनो वाज लागिला ताले he asked me what I was doing एमती हो तापर नंबर 10 he asked me which book I dash he asked me which book I dash option la I wanted double I wanting triple I want IV none कोटा हो he asked me which book I dash wanted है ना wanting है ना want है তাহলে এইটা গোটে এইটাই মধ্যে ডবল এইচ क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच ହେଇଛି ତେଣୁ କଣ ହବ पास्ट ହେଇଯିବ ସେ व्हाट आई वांटेड ହବ କଣ व्हाट आई वांटेड रिपोर्टेड स्पीच रे डबल एच वर्ड क्वेश्चन एटा थिला सिंपल पास्ट ହେଇଗଲା वांटेड ହେଇଗଲା he asked me which book I wanted number 11 the teacher ordered me not to dash there the teacher ordered me not to dash there option I went double I go triple I going IV none कोटा हो the teacher ordered me not to dash there एटा गोटे imperative sentence reported speech है imperative sentence एटी order permission इत्यादि थिले कोन ताको imperative sentence कहा जाय तेनो एटी कोन हो टू लागिछि टू इन्फिनिटिव भार्ब एठी लागिबो टू पर जो भार्ब लागि सेटा इन्फिनिटिव कहा जाय तेनो एठी केवल प्लेन भार्ब टा लागिबो कोन लागिबो ताले गो लागिबो कोन लागिबो गो टू प्लस इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट भार्ब एठी लागिछि तेनो द टीचर ऑर्डर्ड मी नॉट टू go there एमती हो not to go there ताले काई केला इंपेरेटिव सेंटेंस एठी हुए द टीचर ऑर्डर्ड मी नॉट टू go there ओके इंपेरेटिव रे 2 प्लस इन्फिनिटी लागे 12 नंबर देखिबा the teacher dash the boys the teacher dash the boys I thank double I thanking triple I thank IV none कोटा हो the teacher dash the boys स्पेशल यूज रे एक्सप्लेनेटरी एटा गोटे एक्सप्लेन कोन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रे सिंपल पास्ट ही स्पेशल केस रे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रे बा आश्चर्यजनक वाक्य बा विस्मयसूचक वाक्य रे एटा को विस्मयसूचक वाक्य द टीचर डैश द बॉयज है विस्मयसूचक एक्सक्लेमेटरी वाक्य रे एटा इंपेरेटिव सॉरी हां एटा एक्सक्लेमेटरी वाक्य रे कोन हिची रिपोर्टेड स्पीच हिची एक्सक्लेमेटरी रिपोर्टेड स्पीच हिची द टीचर डैश द बॉयज thanking thanked एटा हो thanked the teacher thanked the boys the teacher thanked the
voice ओके एक्सक्लेमेटरी वाक्य रे कोन हिची ना एटा सिंपल पास्ट ही थाई the teacher dash the एटा रिपोर्टेड स्पीच रो एक्सक्लेमेटरी वाक्य टी रिपोर्टेड स्पीच हिची डायरेक्ट एक्सक्लेमेटरी थिला रिपोर्टर लाल को से एडी बोलला the teacher dash the voice thank the voice ओके ताले आज एट रहिबा भाबुची आपण बुझी पारचंती कि नै मते कमेंट माध्यम रे जणातु जदि बुझी न पारचन तले त बेसिक सूत्र गुडा को मते आपण को बुझिया पे पड़ियो आ एटा एडवांस पाठ गुडा सो आइगला एथि ठीक अछि वीडियो री केमति लागला कमेंट माध्यम रे जणाइबे जदि भल लागुची कमेंट माध्यम रे जणातु खराब लागले कमेंट माध्यम रे जणातु कोठी असुविधा लागुची आ वीडियो को लाइक टे करंतु सांग साथी को सहित शेयर करंतु आ जदि आपण बर्तन सुधा ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु और बेल आइकन को क्लिक करंतु ताले परवर्ती वीडियो नोटिफिकेशन आपण पाखु सबटा आगे पहुंचियो धन्यवाद जोडी तांतु भलो तांतु सुखर तांतु थैंक्स फॉर वाचिंग।